So we'll begin with the practicing concentration. थोड़ी देर समाधि का अभ्यास करेंगे 10-12 मिनट तक, ताकि चित्त समाहित हो सके और जो सूक्ष्म बातें हम विवेचन करेंगे वो हम एब्जॉर्ब कर सकें. So practice silently. Whichever kammathana we use, you can use that and collect the mind.
There has been some problem in my electric connection, so I'm doing now on phone. Are you able to hear me? Yes, sir. Very clearly. Okay. तो आज हम गेयसिता उपेक्षा और निखम्मसिता उपेक्षा के कॉन्टेम्पलेट करेंगे इनके बारे में। उपेक्षा भावना से हम सब परिचित हैं। तो भगवान ने जो गेयसिता उपेक्षा की बात की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेते हुए आंखों से रूप की बात करते हैं। तो आंखों से देखने पर जो किसी मूर्ख, मूढ़, अशिक्षित मनुष्य में संभाव जागता है, जिसने विकार जनित सीमाएं पार नहीं की हैं। मतलब रूप के प्रति जो अटैचमेंट है वो वहीं का वहीं है, बट एक आर्टिफिशियल इक्वानिमिटी इम्पोज कर रहे हैं अपने, जिसने कर्मों की या परिस्थितियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। अविपाक जनस, जो परिस्थितियां हैं जीवन में, उनको ये सब नहीं जान समझ पाता कि कर्मों का फल है और इसलिए उनके प्रति संभाव रहे। जोर जबरदस्ती से क्या करें, मजबूरी है, टॉलरेट करना ही पड़ेगा, एंड यू ट्राई टू rationalize. But there's no wisdom in that toleration. जो अज्ञानता के खतरों को नहीं देख पाता है, not able to see कि ये जो आर्टिफिशियल इक्वानिमिटी में रख रहा हूँ, अपने भावों को सप्रेस करके, वो सचमुच में मेरे को इस परिस्थिति के प्रति ऊपर नहीं उठा रही है। इट्स एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट जो मैं अपने मन के हिसाब से, अपनी विल पावर के हिसाब से कर। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या भगवान एंड में कहते हैं, ऐसा संभाव आसक्ति को पार नहीं कर पाता। So now we can reflect on that. It's a very important statement being made. ऑफिस में बॉस अगर उल्टा सीधा बोलता है तो भी नो यार, उसको कुछ कहेंगे तो नुकसान ही होगा, तो टॉलरेट कर, ठीक, हमारा भी कोई दिन आएगा फिर देखेंगे इसको। नो, that's the usual kind of stuff which goes on in the mind. Tolerate it. कुछ कहूंगा तो फिर वो और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। Just tolerate it. There's somebody has died and gone to crematorium, and it just doesn't have any, the rows of people bodies burning there doesn't have any influence on me. I'm just too lost in my own stuff. Then I say, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लोग तो आते जाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो सेंटिमेंटल लोग हैं जो परेशान। The fact is that you just ignoring the impact of what is happening. That's not equanimity, that is apathy. Unwillingness to allow the impact on the senses, on the mind.
चैंटिंग करते हैं, जरा धम्मोमि जरा मनति तोति, व्याधि धम्मोमि व्याधि मनति तोति, but doesn't impact us. And we think, oh, I'm being equanimous, it doesn't matter to me. I know everybody will get old, सभी बूढ़े होते हैं, सभी बीमार होते हैं, सभी मरते हैं, क्या इस बात को लेकर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? You're not allowing that fact to sink in. और एक और extreme and a sheer recklessness. The attitude towards COVID, as we have seen in last few months, अरे छोड़ो ना यार, हो गया, देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा ही पैरानॉइड हो रहे हो, कोविड हो जाएगा, हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलाज सब हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। So you don't want to be mindful, you don't want to be careful, you don't want to use the usual standard precautions. So lack of mindfulness we justify as equanimity. So that is the foolish kind of equanimity which the Buddha is pointing out to us. Now, see the words which the Lord uses, very beautiful words. असुतो पुत्थु जनस्य, इसने श्रुत नहीं, समझा नहीं है, टीचिंग को सुना ही नहीं है, सामान्य आदमी है। मूढ़स्य, मूढ़ है, डिलूडेड है इतना कि वो देख ही नहीं पाता है। This he says is the गेह सितापेक्षा, and it obviously applies with respect to each and every sense too. अब इसके कंट्रास्ट में नेखम्म सितापेक्षा क्या हुई, जो भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने की। बेसिक स्टेटमेंट वही है जो कि नेखम्मसिता सोमनस्य की थी, यह जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं। जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो संभाव जागता है। ऐसा संभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है। That's the key thing. Key thing is that कि रूप के प्रति आसक्ति नहीं है, उसको ट्रांसेंड कर दिया। So you can see this is deepening of the insight of anicca. First stage of insight of anicca was it gives joy. Oh, the burden of seeking sensory pleasures is dropped. The second stage was further deepening. And yeah, of course, I'm no longer seeking sensory pleasures, but I'm still on this shore. I'm still not transcended. I'm still not having the taste of liberation. That gives unpleasant mental state. एक लालसा जागती है कि मुझे करना चाहिए, but there is a tinge of sadness in the mind at not having reached that state of arya. And still further deepening of the equanimity. Okay, yeah, there is happiness, there is unhappiness, but they are all impermanent, they are all going to change. So let me not allow the mind to either get carried away by the somanasya or domanasya, and see that they are all impermanent, they are all changing.
सब्बेते रूपा अनिच्चा दुक्खा विपरिणाम धम्मा एवमेतं यथाभूतं सम्मपन्याय पश्यतो उपज्यति उपेक्षा. So that is the real equanimity which we are supposed to practice based on understanding, a deep understanding and realization of impermanence of things. That is the depth of equanimity, depth of understanding of anicca. क्या उसकी खास बात है? या एव रूप उपेक्षा रूपं सा अतिवत्तति, वो अतिक्रमण कर देता है रूप का, अंदर उसके प्रति उसमें कोई अब आकर्षण नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा, कोई राग नहीं जागेगा. देख लिया है किसी चीज को, अगर हम सचमुच में देख लेते हैं इसमें कोई सार नहीं है, तो फिर उसके प्रति राग द्वेष नहीं जागता. जैसे मैं बार बार उदाहरण देता रहा हूँ खिलौनों का. अब खिलौनों के प्रति न राग जागता है न द्वेष जागता है. बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, दैट इज देयर age to play, you understand, but it doesn't create any invasion of the mind at all. That is the upekha, tyaga dharit sambhav. So let us contemplate on that for some time, kind silently, our own experiences of interaction with the world at six senses, and see where we stand. That will be the good thing to do.
See the transition from nekhammasita domanasya to nekhammasita upekha is a very crucial phrase in our practice. When we pass through a period of extended period of that kind of a unpleasant mental state of longing for liberation, then the teaching comes to the help. And we have the teaching of the ancient sages. One should await one's time. Alam Nagameya. It doesn't mean we don't do anything. We do whatever we can. But wait, patience. And that's the final teaching which the Buddha gives to Ananda. Powerful. जब हमने कई बार उसको पढ़ा है महापरिनिब्बान सूत्र में, तस्माति आनंद अत्तदीप विहरथ अत्तसरण अनन्य शरण धम्मदीप विहरथ धम्म शरण अनन्य शरण. अपना दीप, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी ही शरण रखो, किसी और की नहीं. और अपनी शरण कैसे होगी? धम्म दीप, जो भगवान जो टीचिंग है उसको अपना लाइट लैंप बनाओ, मेक दैट एज द लाइट. धम्म शरण, धर्म की शरण रखो, अनन्य शरण, किसी और की शरण. धम्म की शरण का मतलब सती और प्रज्ञा की शरण. सती पठान की शरण. So we do whatever we are taught to do, cultivate the paramis, because that is seen to be one of the reason ki even when everything else is apparently fulfilled, still crossing over is not happening. So it is said, yeah, still the storehouse of merit is not enough. So practice that. Dan, Sheel, Nekhamma, Satyas, Adhishthan, all these. And to gladden the mind, practice Brahma Viharas. ताकि जो दोमनस्य की स्थिति आई है उससे निकल के उपेक्षा की स्थिति में आ सके. ब्रह्म विहारास कल्टिवेट इन उपेक्षा. कम्मस्य का कम्मदाया दा and so on. So that is the deepening of our practice, deepening of anicca sanya, dukkha sanya, ultimately leads to very deep equanimity. You are at peace with the world the way it is. But again, doesn't mean we don't act out of compassion, out of kindness, out of goodwill. But the mind is stable. That is the nekhamma sita upekha. ऐसा संभाव जो इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति को पार कर जाता है. इसीलिए इसे त्याग आधारित संभाव कहा गया कि जो विषय इंद्रियों के विषय हैं, 6 इंद्रियों के विषय, उनके प्रति जो आकर्षण रहता है उसको त्याग दिया है, समाप्त हो गया. चाहे वो आंख से दिखने वाला रूप है, कान से सुनाई देने वाला शब्द है, एंड सो ऑन. ऑब्वियसली जब ये डेवलप होगा तो जो
सांसारिक संभाव है तो अपने आप छूट जाएगा. You developed such deep equanimity based on wisdom. So sequentially, we dropped the worldly aspects of somanasya, domanasya, upekha, and settle in the renunciant, or you can say त्याग आधारित qualities, which ultimately will get transcended also. So I think we can stop now, and if there are any comments or questions, we can take them. अपने अनुभव शेयर करना चाहे, कोई प्रश्न हो, वेलकम. जी. मेरे मन में एक पहले दुविधा होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो रही है. दुविधा ये थी कि क्या मतलब इज इट नेसेसरी फॉर person like me who has awareness about social activities and I'm a social worker per se, तो क्या बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊं और फिर इसमें बैठ करके फिर अपने मन को एकाग्र करके और देखा वगैरह सब डेवलप करूं. तो मुझे लगा कि that would be running away from the things that I am doing, so let me see how I affected. तो आपका जो आज सुन रहा था मैं, तो मैंने फिर ये सीन रिक्रिएट किया और जो मैं देखता हूँ और जिस तरह से मैं पहले रिएक्ट करता था और चिट्ठियां भेजता था और उसमें काफी एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता था जिसमें आई वुड बी ऑलमोस्ट क्रिटिसाइजिंग टू द हिल्ट. बट टुडे आफ्टर listening and after doing penance for some time, the thought completely changed and I thought that I must have compassion for all of those people who are working. It is maybe their understanding and their profile and their lack of training which is resulting in what it is. So rather than being critical about everything, it could be still highlighted, but in a manner that they are not offended. I am not carrying it with me. I'm just doing what I should be doing. And then leave it to them whether they do it or not. And I don't carry it with me. So immediately there was a positive response within myself, and I felt, yes, that is the right thing. That's what I wanted to share with you, that whether I'm on the right path. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Questions, kindly unmute and speak to sir directly. So, Darsab, I'll make some commentary and then just invite you to maybe respond to it. है ना? तो ऐसा लगता है, इसको दूसरी बार आज सुना और फिर जब खुद का एक्सपीरियंस मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है कि जो दो इक्वानिमिटीज की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा लगता है कि कुछ डोमेन्स में, कुछ परिस्थितियों के सिलसिले में, स्पेशली जो मेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, विचार हैं, बिलीव्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, है ना, कुछ के सिलसिले में तो देयर सीम्स टू बी अ जेन्युइन सीइंग थ्रू उसकी लेट्स से एम्प्टीनेस, सो टू से, है ना. बट ऐसा भी दिखता है कि कुछ के स्थिति में एक्चुअली वो जेन्युइन सीइंग थ्रू तो नहीं है. इट इज मोर दिस
अंडरस्टैंडिंग के ऐसा होना चाहिए, और देयरफॉर देयर इज व्हाट, जैसा आप बता रहे थे ना, एक एनफोर्स्ड या कंट्राइव्ड या आर्टिफिशियल या एक्सटर्नली विल बेस्ड एब्सेंस ऑफ लाइक फॉलिंग इन और रिएक्टिवनेस, जो भी कहें, है ना। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि दोनों हैं एक्चुअली, ऐसा लग रहा है. So that's really my statement, and I'll welcome any response. It's very true. That's the way we move from one domain to another domain. It doesn't happen कि एक चीज समझ आ गई तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ये एक चीज के प्रति हमारी समत्व भाव पुष्ट हो गया तो बाकियों भी हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है. Because it depends on our latent tendencies which are strong within us. तो ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल. कुछ चीजें पकड़ में आ जाती हैं, उनके प्रति संभाव पुष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ के प्रति अटैचमेंट अभी भी है. कुछ व्यूज के प्रति या जो भी है, रूप के प्रति या स्पर्श के प्रति, there can be so many kind of sticky points in our practice, in our life stream, which we try to identify. इसीलिए मुझे लगता है कि उनको तोड़ तोड़ के हर एक को देखना आवश्यक है. सिर्फ ये कहना कि मेरी वेदना के प्रति समता पुष्ट हो गई तो सफिशिएंट नहीं है. एक भ्रम में आदमी रह जाता है. So you have to see with respect to every sense door and then check up, yeah, here still there is some bondage, and then work on that. So that was the point you had made yesterday. I think कल आपने दो सवालों के जवाब दिए ना, एक सुरेन जी का और शायद गीता का था. शायद I think this was your point कि जो ये विभंग सुत्त जो हैं, so I'm assuming there is a category of सुत्त जिसमें विभंग बार बार आता है. So मुझे अब ये समझ आ रहा है मुझे ये समझ आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि विभंग सुत्तों में जिस तरह से encourage किया जा रहा है to really work not in terms of broad categories, rather उसका काफ़ी विभाजन कर करके और फिर अपने एक्सपीरियंस को कोशिश करना डिसएग्रीगेट करना विद रिस्पेक्ट टू जो भी उस सूत्र में जो भी उसका डायमेंशन है, क्राइटेरिया है. दैट्स व्हाट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग. सो जो चीज़ जब हम एक होल WHOLE के हिसाब से देखते हैं तो जो चीज़ एक तरह की लगती है, जब उसको डिसएग्रीगेटेड देखा जाता है तो वो बदल जाती है. दिस इज हाउ आई एम नाउ अंडरस्टैंडिंग, यू आर नाउ एनकरेजिंग. So I'm simply trying to rephrase what you're saying just to confirm कि आप यही कह रहे हैं. जी जी बिल्कुल यही, exactly same. This is what I said yesterday also in some detail. So, Professor, basically, what I understand from the discussion that that Antaji just had with you and what you said yesterday, I think primarily we should use this sutta and other such suttas to perhaps identify our latent tendencies, latent weaknesses, which may not be apparent. For example, today I realized that I'm very sensitive to words that are spoken. And earlier also one knows about it, but one knows a little more sharply when one looks at each sense and sees. And then, of course, the thoughts are the ones which create maximum trouble in terms of what they do to us. So I think it has been very useful. Thank you very much.
Yeah. I mean, we start with a overall kind of study, ना? हाँ, 5 खंड हैं उनके प्रति हमको एक broad kind of, क्या कहते हैं उसे, ballpark kind of understanding. We start with that, of course, and we develop it, and then as we penetrate deeper, we realize यार कुछ कमी है, ऐसा नहीं है. पूरा करने से, of course, you can say that this is requirement of Sotapanna. Some people say this is requirement of Anagami and so on and all. I mean, we don't want to get into all that kind of this bifurcation कि मैं तो यहीं पे रुकूंगा, आगे तो मैं करूंगा ही नहीं. I mean, when we see the problem in psyche, we see something, why should we say कि ये मुश्किल है, इसको छोड़ दो, बाकी देख लेते. So that's what I mean. There is a school of thought which is I think correct also, that these latent tendencies will remain right till arahantship, and therefore if you're trying to handle them straight away, that will be extremely difficult job. And yeah, maybe that's true, but my way of looking at it is that if you strive for moon, you will at least end up in some good high tree. Otherwise, if you start with a high tree, you will end up in the foot of the tree only. Thank you very much. So it appears दो issues इसमें अब निकल के आ रहे लगते हैं. एक तो कि हमारा परिचय फिर काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, जो आप बहुसूत्र जिसको हम पढ़ते हैं ना सूत्रों, संगीतीय सूत्र में और अलग सूत्रों में, कि हमारा परिचय इन फ्रेमवर्क से रहे. क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है कि किन किन मैकेनिज्म से, किन किन तरीकों से, किन किन फ्रेमवर्क से, किन किन क्राइटेरिया से एक्सपीरियंस को डिसएग्रीगेट करना है, तो अगर मैं चाहूँ भी तो आई डोंट हैव द टूल सो टू से, द वेयर विद ऑल्सो टू से, है ना. सो दैट्स वन. दूसरा जो विभंग हैं, सो आई एम ऑफ कोर्स नॉट फेमिलियर. तो क्या ऐसा है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ विभंग संयुक्त और वहाँ पे वी हैव सो टू से मतलब ग्रेटर डिटेलिंग, ऐसा है? और what's your advice on improving one's familiarity with the more detailed frameworks? There's a Vibhanga Sanyutta in which number of Vibhanga Sutras are there, and they are also found elsewhere, not in that Sanyutta but in other places also, which deal with the analytic exposition on various things. कई लोग उसको कहते हैं this is the kind of forerunner to the Abhidhamma, and therefore on that basis the dissection is done so kind of finely that it may or may not be relevant, it may or may not be necessary. Many people have different opinions about that, of course. But there is a section of that kind. Dhatu Vibhanga Sutta, for example, we hear our teachers talking so much about it. The most profound sutta, and that is a talk given to unsolicited talk. Normally Buddha doesn't give unsolicited talks. It's an unsolicited talk given to Pukku Satti, who has come all the way from Kandahar and assumed that Lord Buddha is preceptor, and he has changed the dress also. He is supposed to be a king of Kandahar. Comes all the way walking, and at Potter's place he is staying for the night. And the Lord comes there because he sees with his insight that he is not going to live much. So he comes all the way from Savatthi, stays in the same place, and gives him an unsolicited discourse. I'll teach you Dhamma, Bhikkhu, he says that, and starts. And a discourse of magnitude, phenomenal magnitude. Dhatu Vibhanga Sutta. You can see that profundity. It needs weeks and weeks to really assimilate what the Buddha is telling to that novice bhikkhu, who is not even a properly ordained bhikkhu. उसने अपनी मर्जी से ही भगवान को अपना आचार्य मान के, प्रिसेप्टर मान के अपने को ऑर्डेन कर दिया. And the discourse is so profound.
And similarly, others, the Salayatana Vibhanga, then there are other Satya Vibhanga Sutta, complete details of the Four Noble Truths are laid down. So they are really gems, which Buddha says, there are many suttas which are deep and deal with the depth of Dhamma, and many people will ignore it, and ultimately it will become extinct. वो भगवान उसको कहते हैं एक सूत्र में, पानी सूत्र नाम से आता वो, कि वो खाली ढोल जो है रह जाएगा, वो ढोल पीटते रहेंगे या कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्योंकि उसका सार छूट गया, लोगों ने उसको रिसाइट ही नहीं किया, उसको पढ़ा ही नहीं, रिसाइट ही नहीं किया, तो obviously they will all end. This is what Buddha predicts. So I think we owe it to him as his children to study them, if I may put it that way. So कभी कभी जब ये विचार आता है कि अभी मैं इतना ही कर लूं, या मेरे बस का इतना ही है, या कम से कम मैं इतना तो कर लूं, तो व्हाट इज आपके एडवाइस में ऐसे विचारों को किस तरीके से वाइजली देखा जाए? That's quite a difficult decision. I think a teacher is needed to really advise a person whether he is really doing it out of laziness or it's a realistic appraisal of his mental state. एक टीचर की बहुत आवश्यकता है उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है. Of course, somebody may have a strong confidence and strong wish. Actually, it's not even confidence. It's a strong wish. कि भगवान ने कहा है कि डीप सुत्ता ये लोग पढ़ते ही नहीं है, इसको चैंट ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं, ये समाप्ति हो जाएंगे. So out of gratitude to the Lord, let me study it and see, जितना समझ में आ जाएगा उतना ही ठीक है, फिर ट्राई करूँगा. 8-10 बार ट्राई करूँगा, शायद कुछ समझ में आ जाएगा. Then I'll search for comments from others and search for here, there, and see if somebody else has spoken about the sutta, and then try to make a understanding. And all that comes from that initial chand. मुझे भगवान की वाणी को ठीक से समझना चाहिए, जो गहरे सुत्ते हैं वो भी समझने चाहिए. But I won't say that everybody would be in a position to do that. His advisor, his mentor, Kalyan Mitra, is probably needed for many people to advise whether he should really go for, because अगर foundation clear नहीं है तो फिर वो get lost. मेरा एक प्रश्न बंते जी से है. बंते जी, आपकी फॉरेस्ट मोनेस्ट्रीज में शायद स्क्रिप्चर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला जाता, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है. मे बी रॉन्ग ऑफ कोर्स. एंड practice in daily conduct is perhaps the focus there. So is that a problem, or that's not a problem in the context of what Professor Dhar is telling us about what we can learn more deeply and adopt in our life from the scriptures itself? हाँ सुनील जी, यू वेरी राइट, बिल्कुल ठीक बात है कि मेरे ख्याल से कई हिस्टोरिकल कारणों की वजह से एक शायद धारणा कहें या मान्यता कहें ऐसी बन गई है. अब एक तो है ना, एक चीज जो मैंने सीखी है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज, है ना. तो ये सही बात है कि कई बार शायद क्या कहें, हमारे ट्रेडिशन में कहें या थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में कहें, ऐसी कई 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 बार ऐसी बात सुनने में आती है. दैट यू आर वेरी राइट, मुझे भी ऐसी बात आई है. दिलचस्प बात यह है कि व्यक्तिगत एक्सेप्शंस बहुत सिग्निफिकेंट हैं इसमें. जैसे कि एक मंक है यहाँ आए थे, आपको याद हो, मोनेओ करके हैं. ही हैड कम हियर मेरे ख्याल से
2018 की बात है, ऑस्ट्रियन मंक हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। इवन एज अ जूनियर मंक उन्होंने खुद के इंटरेस्ट से जो पाली की कुछ निकाय हैं, फुल निकायज, उसको उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया, फॉर एग्जांपल। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो भी हमारे ट्रेडिशन के हैं और वो भी इन्हीं मोनेस्ट्रीज में बड़े हुए हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ऐसी एक जनरल धारणा है और फिर उसके एक्सेप्शंस हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरी अपनी जो लर्निंग पिछले 4 साल की रही है, वो यही रही है कि मुझे एक्चुअली अपने खुद के समझ से, अपने खुद के विवेक से रास्ता बनाना है, लेट्स या रास्ते को अनकवर करना है ना, क्योंकि उसमें बहुत फैक्टर्स है ना सुरेंद्र जी, अपनी खुद की, स्पेशली अपनी जो खुद की कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, ट्रेट्स हैं, जैसे हम बात करें टेंडेंसीज हैं, तो उसके अनुकूल मुझे बनाना है। बट कि स्टडी है या परियत्ति का जो है, या जिसको हम बहुसूत्र कहते हैं, इसका जो एलिमेंट है, उसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं दिखता है। तो मेरी अपनी समझ ये है कि भाई अच्छी समझ होनी चाहिए। और हमारे कुछ मंक्स हैं भी, जैसे अजान मुनिंदो, जिनसे मैं काफ़ी संपर्क में, वो एनकरेज करते हैं कि आपको फॉर्मल स्टडी का कुछ समय ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं इस तरह से करता हूँ। मैंने अपने मैं कोशिश करता हूँ देखने की कि भाई क्या व्हाट सीम्स टू मेक सेंस, और उसके हिसाब से अपना रास्ता बनाता हूँ। सो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम ट्रेडिशन से या जिस तरह की चीज़ें, प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको हम होल एंड सोल स्वॉलो कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। हमें इनकरेज किया जाता है कि भाई खुद अपना भी समझ, जितनी समझ है उसको लगा लो। और उसमें मैंने देखा है कि बहुत फ़ायदा होता है कि अगर एक टीचर है जिसमें आपको फेथ है ना, तो फिर आप कर सकते हो कि अच्छा, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो आई कैन देन take it with some confidence. So I don't know if that responds or not. I mean, I've meandered and covered a broad territory, but that's really what I would say. I get it. I think you've given the answer quite well. Thank you. सर, आपने जब ये कहा कि आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन, like where we try to suppress things or not understanding the karma principles, how does it what is the difference between this when you speak about healthy sense of self? Kahin na kahin, you have to without I mean, when you start identifying with it, at least you start somewhere with healthy sense of self. How is that different is one thing what I want to ask. And second, आपने ये दो examples जो दिए थे, crematorium और when the boss is shouting at you, and इससे कि क्या फर्क पड़ता है, I'm not talking about as such suppressing it. तो मुझे ये जानना है कि वहाँ पर हम it is better to be quiet without suppressing, and then cultivate that patience, because towards the end you also spoke about Brahma Vihara and Khanti ki Parmi. So how does one really understand ki what is it going on? Like especially आपने जब ये crematorium की बात की थी कि ये तो सब चलता ही रहता है, and तो वहाँ पर वो are you talking about कि what is the feeling which is happening? Is that so, or it's just a thought कि people will come and go and it's okay? It's not about not having empathy. I'm just asking, how do you feel and what is it going on in you? Is that is what you're pointing out to? जी, it's when there is a sensory impact on us, the feelings would arise.
You can't prevent them from arising, but you can ignore them. That's the point. Just ignore it and distract the mind here, there, do this, do that. And then say, oh yeah, it's okay, it doesn't matter. This also is okay, that also is okay. You're getting upset, boss is saying something, गुस्सा आ जा रहा है, इसको मजा चखाना है, but no, मुश्किल है यार, क्या करें? So you forget that, you try to forget. I mean, of course, from the point of view of practicality, it is there. The issue is not that. The issue is whether I am aware of the state of my mind. That is the point. At every moment, am I aware of the state of the mind, and what is it that is promoting response to the situation? Is it sati and panya, or is it delusion? That's the point. So depending on that will be the criteria for judging the quality of the upekha. If it is felt that I am trying to be equanimous, the very fact that I am trying to be equanimous means there is a problem. But still I am on the work. If there's nothing wrong in it, but it means I am just working on it further. My understanding is still not developed to the extent that I have transcended the sensory impacts. So जो भगवान हमारे लिए स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं कि वो रूप का अतिक्रमण कर जाता है, शब्द का अतिक्रमण कर जाता है. ऑल सेंस डोर्स पे जो भी आ रहा है, it just doesn't impact him at all. Of course he feels, there's a feeling, but it doesn't invade the mind. That's what the word he uses at very places. Feeling was very unpleasant, but it didn't invade my mind. Feeling was very pleasant, but it didn't invade my mind. That's it. That's the way. If I can understand, most of the time, like we try to try to ignore or say something which is not true, is what I feel now. कि ये बोलने के लिए हम बोल देते हैं बहुत कुछ, but reality वैसा नहीं है. What is going on inside may not be what is coming out in your words, and actions are not in sync as such. Yeah, that's true. So when we are really understood Dhamma properly, then they become in sync. So इसके वजह से most of the time there is a disharmony. I mean, I felt so. Yeah, certainly. Certainly. So I could not hear what Bhanteji was talking because some of the participants have written his voice is very low, can't hear. He was talking about something, what if the tools are not available? I could only hear this word tool. I don't know in what sense it was said. So is it to do with this Vedana? You say tools available nahi hai. Is that what was he mentioning? Maybe Bhanteji can speak a bit louder and clarify, please. गीता, जब भंते जी बोलते हैं ना तो मैं अपना वॉल्यूम यहाँ तेज कर लेता हूँ क्योंकि उनका वॉल्यूम थोड़ा पीछे से स्लो है शायद. यानी जनरली हमें काफी एक्चुअली यहाँ दिक्कत हो रही है. मुझे सुनने भी, आई एम एक्चुअली यूजिंग ईयरफोन्स इफ यू नोटिस, एंड आई एम यूजिंग, आई हैव कनेक्टेड separately also, so it's a problem generally. Actually, I'm sorry, it's not just me. There are some other participants also who have just put it on chat box saying that they could not hear what you were talking. So maybe that's right. Curiosity, that's exactly. Could repeat it. It will help others. Yeah. I'm saying exactly that, Geeta, that I am also facing the same difficulty, and that's the reason I've started using earphones just now, and I've also connected additionally, as you can possibly see in front of the screen. That's exactly what I'm saying. मैं ये कह रहा था, मैं केवल कोशिश कर रहा था जो इन्होंने हमें बताया ना आज, उसको अपने जो मुझे समझ आई है तो मैं उसको दोहरा रहा था, just to get a reconfirmation कि जो मुझे समझ आई है वो वही थी जो कह रहे थे. So that was basically what I was doing. और जो मुझे, so I'm going to try and repeat now what I said, summarize and repeat what I said. कि
जो चीज़ें हमें ब्रॉड टर्म्स में और होमोजेनस टर्म्स में क्लियर लगती हैं, सरल लगती हैं, मुझे अब ये समझ आ रही है कि वो अपेरेंट क्लैरिटी या वो सरलता जो है वो थोड़ी सी इल्यूजरी हो सकती है, और इसलिए हमें जो जिस तरह से ये सलायतन विभंग सूत्र है, और ये कह रहे हैं ना, धर साहब कह रहे हैं ना कि इस तरह से और विभंग हैं और एनालिटिकल सूत्र हैं, तो ऐसा मुझे समझ आ रहा है कि हमें इस तरीके से अलग अलग तरीकों से सूत्र में जो एडवाइस दी गई उस तरीके से एक्सपीरियंस को विभाजन करके देखने की कोशिश करनी है. दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट ही इज टीचिंग. और ये जो सूत्र है ये एक हमें फ्रेमवर्क देता है, ये वन सेट ऑफ टूल्स देता है. क्या सेट ऑफ टूल्स? दैट फॉर एग्जांपल फीलिंग्स इतनी 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 तरीके की हो सकती हैं. ये जो कैटेगराइजेशन इन्होंने किया कि रिनंसिएट एटीट्यूड से आप देखो तो ऐसे फीलिंग्स हैं, वर्ल्डली एटीट्यूड से देखो तो ऐसे हैं. तो ये एक हमें ढांचा दे रहा है, ये एक फ्रेमवर्क दे रहा है, ये एक सेट ऑफ टूल्स दे रहा है फीलिंग्स को अप्रोच करने का. तो इसलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या इस तरीके से और भी विभंग सूत्र हैं, विभंग मतलब एनालिटिकल सूत्र हैं जो शायद हमें और तरह के फ्रेमवर्क्स दें और तरह के टूल्स दें. तो इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, इस तरीके से संयुक्त निकाय में एक पूरा सेक्शन है जिसमें इस तरीके के विभंग सूत्र हैं. फिर उन्होंने ये भी कहा कि और जगहों पे अपार्ट फ्रॉम संयुक्त विभंग और भी जगहों पर विभंग सूत्र आते हैं. तो मैं इन चीज़ों को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे इससे ये समझ आती है कि हमें या मुझे कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि जो और डिटेल में डिसएग्रीगेशन के तरीके बताए गए हैं, जैसे कि इस सूत्र में इस तरह से और सूत्रों में बताए गए हैं, उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए. और जिस हद तक वो समझ आती है, जिस हद तक मैं कर पाता हूँ उस हद तक मैं करूँ. तो बार को थोड़ा रेज करें. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ अच्छा ये तो अब हो जाता है, ये तो क्लियर है, इसमें तो रिएक्टिविटी नहीं आती है, तो कोशिश करें कि उन डोमेन